Good morning, students. Welcome on online classes of Eklave International Academy. Okay. Today we will discuss chapter 12, triangles, Heron's formula of class 9, lecture first. Okay. So today we will start from new chapter 12, Heron's formula. Heron's formula, why we will use here Heron's formula? Why we will not use the area of triangle using 1/2 base into height? That all question we will discuss today's lecture. Okay, so first, why we will use here Heron's formula? Generally Heron's formula is used to find out the area of the triangle. Heron's formula किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? Heron's formula. So Heron's formula is used to find area of triangle, but question is arising that area of triangle we can calculate using 1/2 base into height also. area of triangle आप 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट से भी कैलकुलेट कर सकते हो. सो Heron's फॉर्मूला की नीड क्यों है? सपोज इफ इन ट्राइंगल, in that triangle that is 3 centimeter, 7 centimeter and 8 centimeter. These are the three sides of the triangle. Triangle की 3 sides given है. Then how we will find out the area of the triangle using 1/2 into base into height. 1/2 into base into height की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे सपोज करो 8 सेंटीमीटर को बेस कंसिडर कर रहे हो, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल? वी कैन नॉट डिटरमाइन द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. सो इफ इन ट्राइंगल द मेजरमेंट ऑफ ऑल 3 साइड्स आर गिवन, देन वी विल यूज द Heron's formula to find out the area of the triangle. Understand why we will use here Heron's formula? Heron's formula किस कंडीशन में यूज करते हैं या Heron's formula को क्यों यूज किया गया है? ट्राइंगल में 3 साइड्स का मेजरमेंट गिवन है आपको. ओके, देन वी विल यूज द Heron's formula टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके, सो वी विल नॉट यूज हेयर 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट फॉर्मूला. So our first question, why we will use Heron's formula? If in any triangle their measurement of 3 sides are given, then we will use Heron's formula. Next, in that triangle ABC, always remember that angle A opposite side is represented by small a. Angle B opposite side is represented by small b. Angle C opposite side is represented by small c. Meaning is that here small a is equals to BC, small b is equals to AC and small c is equals to AB. Angle just opposite, these are the measurement of the side. Now next we will find out the semi parameter. Semi parameter. So semi means half, which is represented by S. So what is the perimeter of the triangle ABC? Sum of all 3 sides, that is known as the perimeter of the circle. So A plus B plus C divided by 2, that is the semi perimeter of the triangle ABC. Now Heron's formula or area of triangle ABC. So area of triangle ABC is under root S minus A, S minus B and S minus C, which will give the area of the triangle ABC. Okay, S क्या है? सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC. वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली. सेमी पैरामीटर A प्लस B प्लस C अपॉन 2 से सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले में, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC. अंडरस्टैंड? सो Heron's फॉर्मूला कब यूज करना आपको स्टूडेंट? व्हेन
the measurement of the all three sides are given, then in that case we will use the Heron's formula. Now we will discuss example. In that triangle given to you, that is 4 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter, then find एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. आपको क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कैलकुलेट करना है. सो हाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल. फर्स्टली कैपिटल ए जस्ट अपोजिट इज स्मॉल ए, दैट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए विच इज इक्वल्स टू बी सी 8 centimeter. Small b is equals to AC is equals to 6 centimeter. Third is AB is equals to small c is equals to 4 centimeter. Now semi parameter S equal A plus B plus C upon 2. What is the value of A? 8 plus 6 plus 4 upon 2. 10. 18 upon 2 which is 9 centimeter. So semi parameter of triangle ABC is the 9 centimeter. Now we will find out the area. So area of triangle ABC equals to under root S minus A, S minus B and S minus C. Now we will substitute the values of S, value of A, value of B and value of C. Value put करो. What is the value of S? 9. 9 minus 8, 9 minus 6 and 9 minus 4. Under root 9 multiply 1 multiply 3 multiply by 5. Now under root 9 write down separately. Factors 3 multiply 3 multiply 3 multiply by 5. जो भी रूट में नंबर आ रहा है उसके क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. देन हाउ वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. फर्स्टली वी विल मेकिंग द पेयर ऑफ सेम नंबर. फर्स्ट पेयर कंप्लीट, सो 3 विल कम आउटसाइड द रूट. आफ्टर दैट एनी पेयर इज प्रेजेंट, नो वन पेयर इज प्रेजेंट, सो राइट डाउन एज इट इज 15. सो area of triangle ABC is 3 under root 15 centimeter square will come. Area of triangle ABC क्या बनेगा आपका 3 under root 15 centimeter square. So that is the general and basic question based on Heron's formula. Understand? So Heron's formula में आपको area of triangle calculate करने के लिए किसकी requirement है, either 3 side is given or their 3 side ratio is given and perimeter is given, then we can easily find out the area of the triangle. Okay, now next is, you all student heard that area of equilateral triangle, area of lateral triangle which is equals to under root 3 upon 4 multiply by side square. But you don't know that how this formula came. So today we will discuss that how under root 3 upon 4 multiply by side square comes. So that is the area of equilateral triangle. So let we consider triangle ABC is an equilateral triangle, meaning is that all 3 sides are equal. So AB which is equals to BC which is equals to AC, we will consider let A, that is also small a and small AB, BC, CA all 3 are equal. Let क्या किया है, A किया. Now we will calculate S. S क्या होती है, पैरामीटर A plus B plus C upon 2. Small a, B is also A, C is also A, divided by 2. So S equals to 3A by 2. That is the semi parameter of equilateral triangle, right?
Now area of triangle ABC, area of equilateral triangle ABC is equals to under root S minus A, S minus B and S minus C. Under root, what is the value of S? 3A by 2, 3A divided by 2. S value 3A by 2 minus, what is the value of A? A upon 1. S value 3A by 2, what is the value of B? B का मेजरमेंट भी क्या है? A. So A divided by 1. Again S 3A divided by 2 minus C value also here. Now simplify. Under root 3A by 2 multiply by LCM 2, 3A minus 2A. Same here, 3A minus 2A divided by 2, and here also 3A minus 2A divided by 2. Now simplify. Under root 3A by 2, then A by 2, then A by 2 and A by. Now we will make here same pair. So area of triangle ABC is equals to under root 3A, that forming 3A power 4 divide 2 to 4, 4 to 8, 8 to जा 16. ये बना. इसको आप क्या राइट कर सकते हो? अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट A पावर 4 डिवाइड बाई रूट ऑफ 16. रूट 3 एज इट इज. अंडर रूट 16 कैन बी रिटन एज 4 and A power 4 is A square. So area of triangle ABC is equals to under root 3 upon 4 multiplied by A square. That is the area of equilateral triangle. So equilateral triangle का एरिया क्या होगा? Under root 3 upon 4 multiplied by side square, which is the area of triangle ABC, which is equilateral triangle. अगर आपको साइड गिवन है then easily you can calculate the area of equilateral triangle. Understand? Now next type question देखो इसी पे बेस. Given to you that if perimeter of equilateral triangle ABC is 75 centimeter, then find एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. आपको क्या गिवन है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC पैरामीटर गिवन है 75 सेंटीमीटर. देन you will find out the area of triangle ABC. So what we know, area of triangle ABC. ABC is equilateral triangle. What is the area of the equilateral triangle? Under root 3 upon 4 multiply by side square. Side is given, side is not given. So firstly we will find out the side of the triangle. So here perimeter of the equilateral triangle क्या होती है? 3A. Perimeter is equals to 3 multiply by side. What is the value of the perimeter? 75 is equals to 3 multiply side. What is the measurement of the side? 75 upon 3, 25. So side of equilateral triangle will come 25 centimeter. Side calculate कर ली. Now we can easily find out the area of the triangle. So area of triangle ABC under root 3 upon 4 multiply by 25. So क्या बना? 625 under root 3 upon 4 centimeter square. That is the area of triangle ABC, which is equilateral triangle.
अंडरस्टैंड। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या था, पेरीमीटर इज गिवन टू यू 75। आपको ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैलकुलेट करना है। सो हाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी? टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, फर्स्टली वी विल रिक्वायर द साइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। सो फर्स्ट क्या किया आपने, ट्राइंगल एबीसी की साइड कैलकुलेट की है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबी। अंडरस्टैंड। नाउ सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखो इसी पे बेस्ड। सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखो किस फॉर्मेट में हो सकते हैं। इफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC are in the ratio 2:4:6 and its parameter is 24 centimeter, then find area of triangle AB. Here sides ratio is given to you and their perimeter is given to you, then how we will find out the area of triangle ABC? To calculate the area of the triangle ABC, we will require the side measurement, not ratio. So let sides are 2x, 4x and 6x. If ratio is given, then you will multiply by the constant, right? Now perimeter is equals to 24. So how we will find out the perimeter of triangle sum of all three sides? 2x plus 4x plus 6x is equals to 20. 4, 10, 12x is equals to 24. What is the x value? 24 upon 12 is 2. So first side A is 2x. 2 multiplied by 2 is 4 centimeter. Second side B is 4x. 4 multiplied by 2 is the 8 centimeter. And third one is C. C is the 6x. 6 multiplied 2 is 12 centimeter. Now here we find out what is the value of A, what is the value of B and what is the value of C. Now we will calculate S semi-perimeter. So S equal A plus B plus C upon 2. S equal A value 4, 8, 12 upon 2. Then 24 upon 2 is 12 centimeter. S calculate कर लिया, then you can easily calculate area of triangle ABC. So area of triangle ABC is under root S minus A, S minus B and S minus C. Substitute the values. S 12, 12 minus 4, 12 minus 8 and then last side is 12 minus 12. So that become the 0. Meaning is that this type of triangle is not possible. So क्या है, ये पॉइंट्स कोलिनियर बनेगा. बट अंडरस्टैंड हो गया. अगर इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म होता है, रेशियो में फॉर्म होता है, देन हाउ यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. फर्स्टली रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है. पैरामीटर आपको गिवन होगी, उसकी हेल्प से क्या करना है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखो. और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो क्या हो सकते हैं. इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, area is
9/√3 centimeter square. Then find the side. Given to you ABC is an equilateral triangle. Then how we will find out the side of that triangle if area is given to you? So we know that area of equilateral triangle is equals to √3/4 multiply by side square. What is the area of equilateral triangle? 9/√3 √3/4 multiply by साइड स्क्वायर. अब यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है आपको? साइड कैलकुलेट करनी है. सो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/√3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड √3. √3 से √3 क्या हुआ? कैंसिल. सो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड? साइड इज इक्वल्स टू √36. सो साइड विल कम 6 सेंटी. ओके, तो इस पे बेस रिवर्स क्वेश्चन भी हो सकता है आपका. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बेस साइड इज गिवन, देन इजीली वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. एंड इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC is given, then its reverse procedure how we will find out the side of equilateral triangle. Understand? So in today lecture we discuss that how we will find out the area of triangle using Heron's formula. How we will not find area of triangle using 1/2 into base into height if their three sides of a measurement are given to. अगर आपको measurement given है तो उसमें आप 1/2 base into height अप्लाई नहीं कर सकते, because there we don't know the height or altitude of the triangle. But if we know that what is the altitude of the triangle and what is the side of the what is the base of the triangle, then easily we can find out using 1/2 multiply by base multiply by height. Okay, so Heron's formula again. Heron's formula में से एरिया कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करते हैं? सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू A plus B plus C upon 2, meaning is mean of all three sides. That term A plus B plus C upon 2 is not as mid value mean of all three sides. Mean values, okay, generally या इनका क्या करना? मिड कैलकुलेट करना है. सो S कैलकुलेट करोगे यूजिंग A plus B plus C upon 2 से. आफ्टर कैलकुलेटिंग द S semi parameter, we will calculate the area of triangle ABC using √S, S minus A, S minus B and S minus C. अगर क्वेश्चन ये आता आपके पास, prove that area of equilateral triangle is √3/4 multiply by side square, then easily proof कर सकते हो इसकी हेल्प से using Heron's formula. Okay, in the next lecture we will discuss that how we will find out the area of isosceles triangle. आपको isosceles triangle का एरिया कैलकुलेट करना है in simplest form. Then how we will find out the area of isosceles triangle using Heron's formula. Okay, that we will discuss in next lecture. Okay, now so today you do exercise 12.1. Exercise 12.1 with examples. Firstly, you will read the all notes which is written on board. Then after you will solve the all examples. After solving the examples, you will go through the exercise. और students यही sequence होना चाहिए. पहले आपको example complete करने हैं. Then after आपको exercise solve करनी है. In next lecture we will discuss different questions. Thank you.